वो कहते हैं बाल जरूरी है क्योंकि ऐसे ही चलता है, लड़की का लड़की सा दिखना ही अच्छा लगता है, कद की लंबाई, पेट की चौड़ाई, सुमेल अंग, खाल का रंग, चलने का अंदाज, बैठने का ढंग, लड़की होने के कई नियम हैं और लंबे बाल उन सब में अहम है। कुछ अबाउट 10 years ago मेरा मन किया बॉल्ड होने का, टू बस माई हेड। पीपल अराउंड मी स्टार्टेड like making a हो हल्ला about this. When I started writing it, it was frustration, right? कि मुझे जवाब देना है सबको कि मुझसे आप ये सब क्यों पूछते रहते हो? People are beautiful. India is safe. Women have come up to me and told me तुम लड़का लगती हो, तुम similar लगती हो, तुम्हें ये लगता है वैसा है. It's a woman who told me, hey, you need to wear heels because you don't look tall. Hey, you need to look presentable. बेसाख्तापन सीख रही हूँ, लगता है आजकल बचपन जी रही हूँ. जो हिलते हैं वो लिखते हैं और जो लिखते हैं वो ही खिलते हैं. तो ये शब्द आए हैं आंचल, अनीता, धारा से, जो मुंबई से हैं. यहाँ चंडीगढ़ में चितकारा लिट फेस्ट हो रहा है एंड आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू चेज हर एंड मीट हर बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग हर ऑन इंस्टाग्राम. हेलो एवरीवन, जस्किरन हियर विद जस्ट टॉकिंग एंड आंचल विद अस. फर्स्ट ऑफ ऑल आंचल, वेलकम एंड सो नाइस टू हैव यू हियर. एंड मैं आपकी पोइट्री से या आपके शब्दों से तब रूबरू हुई जब मैंने बड़ी अच्छी एक पोइम सुनी जो आई थिंक वायरल भी हो गई है कि आपके बालों से और आपकी कद से लड़की का बालों की लंबाई से नहीं पता चलता. लड़की हूँ तो कुछ नियम भी होते हैं. तो आई हैड शॉर्ट हेयर ऑल माई लाइफ, नॉट माई ऑल माई लाइफ, पार्ट ऑफ मेजर पार्ट ऑफ माई लाइफ. सो इट सॉर्ट ऑफ रेजोनेटेड विद मी. तो when did you write this and this has gone really viral? If you can say some lines about it. So पहले तो just thank you very much for inviting me here. This is amazing what you're doing. और आपकी सिटी चंडीगढ़ is beautiful. मुझे लगता नहीं है मेरा चंडीगढ़ में कभी हमने सोचा नहीं था कि हम यहाँ रहेंगे, पर मुझे मन कर रहा है कि अब यहाँ शिफ्ट हो जाए, जो आपको पसंद नहीं आएगा. वो कोविड के बाद बहुत लोग शिफ्ट हो गए. दैट्स ऑल राइट, इट्स अ फ्री कंट्री. ब्यूटीफुल वाइब. मतलब ऐसा लग रहा है यहाँ के क्रिएटिव भी रह सकते हैं और स्लो भी रह सकते हैं. पीस इज कॉल्ड अब मैं बेपर ही उड़ने लगी हूँ. मैं लिखती थी स्कूल में एंड देन लाइफ हैपेंड, आई स्टॉप्ड राइटिंग. एंड देन मैंने अगेन, इवन आई हैव हैड शॉर्ट हेयर ऑल माई लाइफ, मगर कुछ अबाउट 10 years ago मेरा मन किया बॉल्ड होने का, टू बस माई हेड. And I didn't think much of it because for me it was just a simple decision. But what happened was that people around me started like making a ho halla about this key. And I genuinely started getting questions on why, what happened, did something happen to anyone in the family, are you okay? Like they want to ask if you have the C disease सिर्फ बाल गवाने पे, सिर्फ बाल होने पर, and they for some reason couldn't understand, but why this? अच्छा, आप डोनेट किए हैं क्या? They just didn't understand the reason. Could have just been, hey, I wanted to just see how it looked. And so because I also do photography and I also embroider, I thought I'll make a photo series because now I was frustrated. I was like, enough. I want to give back to you. मुझे जवाब देना है आपको कि मैं क्यों कर रही हूँ. Because 5-7 years of questions from everyone. And then that didn't happen. For some reason, I was not able to express in the medium that I expressed in for a living. I don't know. I don't know what happened. I don't know how it happened. I don't remember the day I started writing. मगर I just once I was like, डायरी खोल के देखते हैं क्या निकलेगा, और लिखना शुरू किया and ये पीस निकल कर आया. अब मैं पेपर ही उड़ने लगी. मैं क्योंकि सिर्फ लॉन्ग पीस में पूरा नहीं बोलूँगी. जो फेवरेट आपका पार्ट है, यू कैन कुछ लफ्ज. हाँ, तो उस है कि वो कहते हैं बाल जरूरी है क्योंकि ऐसे ही चलता है, लड़की का लड़की सा दिखना ही अच्छा लगता है, कद की लंबाई, पेट की चौड़ाई, सुमेल अंग, खाल का रंग, चलने का अंदाज, बैठने का ढंग, लड़की होने के कई नियम हैं और लंबे बाल उन सब में अहम है. सो and this happened, I think the list also came because when I was writing this, so realize हुआ कि I am the shortest in the family also. तो परिवार आपको कुछ, immediate family doesn't say anything ever, but the relatives and the people around you always tell you, hey, heel पहन लो, ये कर लो. So when you start doing these things, these are also kind of act of rebellion, like writing is. And what happened with that, so when I started writing it, it was frustration, right? कि मुझे जवाब देना है सबको कि मुझसे आप ये सब क्यों पूछते रहते हो.
एंड देन इन द एंड मगर अब मैं भी बूझने लगी हूँ, उनकी समझ को समझने लगी हूँ, उनकी कोशिशों को परखने लगी हूँ, उनकी चुनौतियों को कबूलने लगी हूँ। अपने विश्वास, अपने अंदाज, अपने शब्द, अपनी आवाज़, अपने फैसले, अपने ख्याल, अपने ख़त, अपने बाल, अपने कण कण के साथ अब मैं बेपर ही उड़ने लगी हूँ। सो इट स्टार्टेड विद द फ्रस्ट्रेशन कि वो कहते हैं दिस इज दिस, बट देन इट गिव मी पीस। मैं बेपर ही उड़ रही हूँ ना, आई do not care if I have hair or not. I do not care if you think that I don't have something that I should. That's it. And then the journey actually resumed. I wouldn't say it started because school में लिखते थे. It resumed and आप कब से लिख रही हैं? This piece that I wrote was in 2020 after about 15 years. Okay, पर पहले स्कूल में you were writing. स्कूल कॉलेज में लिखते थे, प्लेस होते थे या फिर born brought up in Mumbai. Delhi. Delhi. From Delhi, yeah. तो जैसे हमारे घरों में होता है कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंसेस होते हैं कि पेरेंट्स से या मदर या फादर या दादा दादी नाना नानी कि कोई किसी ने आपको पोइट्री की किताब पकड़ा दी, किसी ने आपको गज़ल सुना दी, चाइल्डहुड इंप्रेशंस रह जाते हैं। एंड व्हाइल ग्रोइंग अप आई थिंक आपको वो पोइट्री समझ भी नहीं आती है, इट्स अ डिफरेंट मीनिंग एट एवरी डिफरेंट एज। तो यू रिमेंबर आपके जो सबसे पहले इंप्रेशंस रहे हो, हु इंट्रोड्यूस्ड यू फॉर द फर्स्ट फोरमोस्ट हमारी फैमिली में उठो कलम और लिखो या यही जरिया है टू वेंट? नहीं, हमारी फैमिली में सबसे ज़्यादा तवज्जो जो दी जाती थी वो पढ़ाई को दी जाती है और वो एकेडमिक स्कूल बुक्स को दी जाती है। वन थिंग दैट आई रिग्रेट इज दैट आई डिड नॉट रीड अ लॉट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड इन स्कूल, एंड दैट इज़ वन थिंग दैट आई कीप टेलिंग एवरीवन कि आप इफ़ यू द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव योर चिल्ड्रन इज़ द गिफ्ट ऑफ रीडिंग। मतलब बस रीड करने, क्योंकि जितने भी good writers that I see, and I'm not even talking about professional writers or authors, I'm not talking about people who write simple captions also on as shallow as like social media. The way they write, they're all good readers. So when you start reading or when you read a lot, it comes back to किसी ना किसी चीज़ में, किसी ना किसी तरीके में it comes back. Even if it is like I said as shallow as an Instagram caption, because उस जिस तरह से आप लिखते हो, बोलते हो, वो जो इम्प्रेशंस रीडिंग वाले आते हैं वो अपने अंदर आ जाते हैं कहीं ना कहीं। मैंने नहीं पढ़ा बहुत ज़्यादा, मैंने पढ़ाई एक्चुअली रीडिंग मैंने स्टार्ट की वो भी कुछ सालों पहले। अच्छा, हिंदी पोएट्स? नहीं, हिंदी इंग्लिश बोथ आई रीड। आई एक्चुअली रीड मोर इंग्लिश। बॉम्बे आके वो थोड़ा गड़बड़ हो गया बिकॉज मेरे घर में हिंदी बोली जाती है तो मेरी हिंदी साफ है। जब हम बम्बई आए, हम करियर के लिए बम्बई आए थे तो हमें लगा कि यहाँ के तो अभी अंग्रेजी बोलनी चाहिए, तो बीच में फिर हम ना इंग्लिश रह गई ना हिंदी रह गई। नाउ आई एम वर्किंग बैक ऑन माई हिंदी। So career in what you had studied? I have, the thing is everyone, it confuses everyone. I have studied journalism, but I didn't pursue it. I worked with radio station, I've been a photographer. I don't like to, because these are labels, right? I'm a photographer, I'm a writer. If I'm a writer, then I can't be a photographer. So I don't. नहीं, I think वो जब हमने भी जर्नलिज्म करी, that that time everybody was asked तो एडिटर बन गई। ऐसे नहीं, इतनी जल्दी एडिटर बनते नहीं, पहली बात। सेकेंडली मैंने कहा इट्स अ क्रिएटिव फील्ड, आई कैन पिक एनीथिंग, उसका बस टैग जर्नलिज्म दे दिया। करेक्ट। तो सिमिलरली मस्ट हैव हैपेंड विद यू बिकॉज़ यू आर क्रिएटिव। मेरे साथ ना मुझे नहीं मजा आया जर्नलिज्म पढ़ने में, क्योंकि मुझे नहीं पता वो सब जो मैंने पढ़ा। But I think उस वक्त, but earlier I used to regret that. Now I don't, because अब थोड़े हम जहाँ हैं वो उन्हीं decisions की वजह से हैं। Regret that I did not quit, like I should have not, because quitting is not acceptable, right? Quitting, I can't be a quitter, and I've been a good student all my life. अच्छे मार्क्स आते थे, अच्छी बच्ची थी, मैं क्विट कर दूंगी तो मम्मी पापा को कैसा लगेगा? So journalism हमने किया, हम पास हो गए, हम आगे बढ़ गए, हमने कर लिया सब कुछ, हमने internship किया in good organizations. And then I got a job at a radio station. There I worked as a producer, as an associate producer, and I got a show also as an RJ. It was a very small show. It was a weekend show, but it was fun. But then I came to Bombay because यार करना तो टीवी था, तो रेडियो तो करना नहीं था, वो तो वैसे भी ऐसा लग रहा था प्लेटर पर मिल गया था। फिर बम्बई आए, फिर हमने थोड़ा कंपनीज में काम किया, UTV एंड ऑल सम चैनल्स में काम किया, एंड देन फिर हमने फोटोग्राफी की। अब हम सब करते हैं। ओके। अब हम अपने पीसेस हम पढ़ते भी हैं, उन्हें बोलते भी हैं, मैं एडिटिंग भी कर लेती हूँ उनका, मैं लिख भी लेती हूँ, मैं फोटोज भी खींच लेती हूँ, एम्ब्रॉयडरी भी। सो आई कॉल माई सेल्फ अ मिक्स्ड मीडिया आर्टिस्ट नाउ, वेयर आई टेक पिक्चर्स एंड देन आई। हाँ जी, आई सॉ दैट, सो अ लॉट ऑफ सेल्फ पोर्ट्रेट्स एंड उस पे आपने एम्ब्रॉयडरीज करी है। फ्रेंच नॉट्स सीम टू बी योर फेवरेट।
एंड आपने डायरीज भी बनाई हैं, दैट लोटस. I make हाउ डिड journals. दैट स्टार्ट? एज इन इज दैट अ बिजनेस कि आप यू डू इट आउट ऑफ शेयर लव फॉर इट एंड जस्ट गिफ्ट इट? So the ones that are there have all been customized, made for clients. It's not a business. I do very Aggressively, special, हाँ. customized journals, but journals happen because of the love for So embroidery. this happens under the Audacious project. No, Audacious is different. Okay. Everyone's gonna get confused now. No, okay. Okay, so I'll tell you. So basically, I make journals, I embroider, I take pictures, I write, I perform. That's one thing. Audacious project is what my partner and I do together. So under this, we've done two projects. One has been, one was my walk from Walk. Bombay to Goa. Yes. It was called Two Feet and a Dream. Second was 60 Days of Wonder, where my partner Prashant cycled from Mumbai to Bangkok. And hopefully our third project got delayed because of some family commitments and COVID. So hopefully this year we'll do our third project. We haven't named it yet, but it hopefully will happen in June. But when you pick these projects, you walked Yeah. 582 Yeah. miles, kilometers, and he's also cycled to Bangkok. Yes. Do you get fundings or sponsors? How does one go? Or is it just you're chasing a dream, or you are? Is it a process of healing? Is it a process of some kind of mental revelations, or is it just out of sheer passion and love for it? मतलब इसके पीछे कई बार लोग कहते हैं यार क्यों तुर पड़ा, क्या रीजन था, why ऐसी तुझे जंदे है, so I'd like to know for people out there कि जब आप एक साइकिल उठाते हैं या जब जूते कस के निकलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? आप कोई मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं या अपने आप से ही एक तरह की you're cleansing your own system or you're trying to know yourself. तो क्या होता है and how do you fund these projects, these very audacious projects? Yes, so actually the first one started just, I was just walking, taking an evening walk, and I was like, hey, you know what, I want to walk from Bombay to Goa. And I went home and I told Prashant, I want to walk Bombay to Goa. And I clearly remember this because, and he was working on his computer, he looked at me and said, okay, cool. And then went back to the computer and I was like, what? I'm talking to you something, I'm excited about it. And then, okay, anyway, I go my way, he's doing his thing. 2 days later, he comes back with the entire route from Bombay to Goa. Babe, this is where you have to walk. This is the route. I was like, what? You were listening? Because पहले मुद्दा वो बन गया था, तुम सुन नहीं रहे. And he walked, and there was no. So the first year, actually, I walked from Bombay to Pune, 2014, to test. And so it started as a simple, I wanted to do it, and then these are also to test our potential to see how far can we. Did it become like Forrest Gump? Did people follow you? A lot of people joined us. A lot of my friends, which is amazing because that's when I realized that यार बड़े अच्छे दोस्त हैं, अपना काम वाम छोड़ के एक दिन के लिए आते थे. They would come in the morning and they would walk with me 30 kilometers the entire day, and then they would go back, which was amazing, and I'm grateful for these relationships in Bombay. This was Bombay to Pune. It was just Prashant and I. I was walking, he was following me. We had a language where अगर मैंने एक बार honk किया तो you go to the left of the road. अगर मैंने 2 बार honk किया, just turn around. I'm trying to tell you something. And he had to follow me because highway पर आप चल रहे हैं. And bags के साथ में नहीं चला था, ऐसे चल रहे थे. And then कोई traffic ना आ जाए, so he had to constantly. So I was walking at 5 km/h speed, and he was driving at that. And our car also got engine गर्म हो गया था हमारा, तो सब issues हुए. Second was Bombay to Goa in 2015, which we also filmed. So he shot, he took pictures, he took video, and there was a cameraman also. And then there was a driver who was driving a. Any interesting incident you remember? Many. So first, to answer your previous question, funding for Audacious 1, for both my walks, there was no funding. We did self-funded. It was all self-funded. Incident was, there were many. There was this one where in my Pune walk, we were Dehu Road, I think था. हम एक रेस्टोरेंट में रुके, बड़ी मुश्किल से मैं बहुत क्रैंकी थी, लंच नहीं मिल रहा था. फाइनली हमें एक जगह मिली, हम वहाँ अंदर गए, एंड वी आर बोथ सिटिंग, एंड देन दिस गाय वेटर कम्स एंड ही सेज, मैम आप लोग अंदर बैठ जाइए. मैं कहा नहीं भैया हम ठीक हैं. नहीं मैम आप फैमिली रूम में बैठिए प्लीज. 2-3 बार ही ट्राई टू कन्विंस है, ना भैया हम बिल्कुल ठीक है, आई वाज लाइक आप बस खाना ला दो. नहीं मैम यहाँ पर ना फैमिली रूम अंदर है, यहाँ ना बैचलर्स लोग आते हैं, अगर उन्होंने आपको कुछ बोल दिया ना तो हमें अच्छा नहीं लगेगा.
some random stranger. I was with a man, technically, who could have, intervened if something had happened. But the man was, it's concerned. Yeah, he was from Assam, and that touched me. There was this one time when, again, I was cranky because there was no breakfast. And then हमें साइड में ना उन दिनों हार्वेस्टिंग चल रहा था, गन्ने सब हार्वेस्ट हो रहे थे, तो I just went and said hi to those guys, the entire there was, I think, a group of 10-15 we have all these pictures, by the way. So these 10-15 people working, and we asked क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, गन्ने वन्ने खाए. And then I said हम खाना कुछ, आपको पता है यहाँ की रेस्टोरेंट है, कोई ढाबा है नहीं, मगर हमारे पास खाना है, they said. And then they got their potli, which had roti and some sabzi and some pyaz, and like, khali lijiye. So we had chips and all. We said, we'll give So you. nice. They said, no, we don't. It was, I mean, you see, the thing is, we judge people, right? I will not do it for everyone. I will look at someone else, say, hi, it seems okay, I can talk to this person, okay, I'll offer food or whatever. There was this another incident, this was during Goa walk, where हमें रोज रात को अपने पैर को आइस करना होता है ताकि स्वेलिंग कम हो जाए, वैसलीन लगाना आता है, आइस करना होता है. हमें आइस नहीं मिल रही थी, तो ढूंढते 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 वी स्टम्बल्ड अपॉन दिस विलेज, आई एम फॉरगेटिंग द नेम. वहाँ पर सालों में पहली पंचायत सरपंच जो है वो वाज अ वुमन. Okay. When she heard, she ensured we got ice. She invited us to our home. She gave us food. She fed us. We celebrated Diwali with them. I think we went there the next day also. ये एक दिन पहले की बात है. अगले दिन हमने जाके दिवाली उनके साथ celebrate की है. Again, I will not open my doors for strangers. For all we know, कोई भी हो सकते थे हम. मगर पूरे गांव के साथ हमने ये सब किया. So the lessons were that India is good, and we were discussing this today also, that when you walk around and meet normal people, people like us, हमें पता चलेगा कि कोई किसी का दुश्मन नहीं है. And this happens also, unless आप ideologies की बात करते हैं, वो जो आजकल बनता जा रहा है हमारी कंट्री में, मगर उसके अलावा people are beautiful. India is safe. There were people who were there was this one, so I remember I was walking, Prashant is following. This man comes and he starts talking to me, and I'm like, no, there was a car, a couple was sitting there, and Prashant, because he was honking, and we were like, in a way, interacting through the honks. Yeah. So this car came and they stopped, they pulled over and they asked me, is that man, is he doing something? आपको कुछ कर रहा है वो? Should you wanna come with us? I was like, no, that's my partner. And I'm saying, who does that? So I felt that India was safe. I felt that my body could do anything because I walked. उससे पहले ना, whenever I would get my periods, I would take a 3-day break. It was also like, in a way, it's also for me to slow down those 3 days. So it's also an excuse for me. But now it's an excuse. Earlier I would be like, नहीं यार, stomach एक हो रहा है, cramp आ रहे हैं, back एक हो रहा है. We had decided we would do about 19 or a few kilometers less on my chum's day, when we had made the schedule. I walked more than usual. I walked, I think, 32 kilometers that day, on day 1 of my period. And I was like, you can do it. Yes, your body can do it. All that you have to do is just condition it to do it. Yeah, and keep talking to it. I mean, I didn't know I would be. So yeah, and then there were friends who joined us. So, इस दौरान did you have these thoughts? Because it is, when you walk, it's meditative. You talk to yourself, you let the thoughts come in. आप बहुत कुछ अपने दिमाग में जो उलझा है उसको सुलझा देते हो. तो उस दौरान आपकी मुलाकात हुई शब्दों से, पोइट्री से? Did you नहीं take breaks or write, or did you come back and start just pouring your heart out? नहीं, because वो इसलिए नहीं होता, because now that we're doing another project also, we've realized, we keep discussing this, when you do a normal evening walk, it's a walk. आप नज़ारे देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं और आपको कुछ आइडिया आ गया, आपने लिख लिया, नोट कर लिया, डायरी में लिख लिया, फ़ोन में रिकॉर्ड किया. ये जो लॉन्ग वॉक, एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा हुआ है कि एंड आई थिंक, हाँ, दिस इज माय एक्सपीरियंस, कि मुझे आइडिया नहीं आया, बिकॉज आई वाज थिंकिंग अबाउट कब खत्म होएगा. आई वाज एंजॉयिंग, कोई फूल होते हैं जिनका नाम है कांग्रेस के फूल, आई डिडंट नो फूल का नाम भी, राइट? कांग्रेस फ्लावर इज अ वीड, देखो, बैड वीड, मगर very beautiful, pretty it's to very look beautiful. at, Lot of amazing. lantana is a beautiful weed, but वो forest खा जाती है. तो देखो, ऐसा है कि प्याज जो है उसमें से बदबू बड़ी आती है, लेकिन मजा बड़ा आता है खा के. तो काफी कुछ पता. तो with me what happened was I was trying to enjoy that.
The process. And I am a multitasker otherwise, which, well, it's not a good thing. Women are made to be multitaskers, and but when I was walking, I was just walking. I was noting things down, like the fact that you can sing on a highway टॉप ऑफ योर वॉइस, नो बडी विल स्टॉप यू, क्योंकि इतना गाड़ियों का शोर होता है कि आपकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही है. उस तरह के नोट्स मैंने लिखे जरूर. मतलब देयर वाज एज अ हर्ड ऑफ शीप वाज गोइंग, और वो मेरे से ऐसे ब्रश करके जा रहे थे, एंड इट वाज सो सॉफ्ट. इट्स अ शीप. मैंने वेरी लिटिल थिंग, टाइनी ट्रिप, मगर मुझे उनको मैंने कभी वो पहले एक्सपीरियंस नहीं किया था. सो आई वाज एंजॉयिंग दैट. My partner, although he'll be able to tell you better, but when he went for his cycling trip, he came back a different person. I think उनका कुछ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हुआ था. मेरा वैसा तरीके का नहीं हुआ था, क्योंकि आई वाज ओनली फोकस्ड ऑन आगे जाना है, खाना खाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. You have kids? No, I have a dog. You have a dog, but you know, it's very important that you have a partner who Yes. is in sync with you for these things, because इन आर सोशल मिलियो और सेटअप वही है जैसे आपकी पोइट्री थी कि वो नियम से ही चलना है. शादी होगी, बच्चे को तो कहीं ना कहीं आपकी ड्रीम्स सो जाते हैं, या कुछ ले जाते हैं, या बैक सीट पे रख दिए जाते हैं. एंड आई सी सो मेनी वुमेन आफ्टर 40 स्टेपिंग आउट कि अच्छा बच्चे बड़े हो गए, नाउ लेट मी डू दिस, देन दे स्टार्ट डूइंग देयर बिजनेस और व्हाटएवर दे हैव स्टार्टेड. सो बट आई थिंक इट्स नाइस दैट यू हैव never let go of your dreams. But I will 100% credit goes to Prashant, because see the thing is, you will, if you have आग है अगर तो आप करेंगे, आप उनके बिना भी करेंगे. मगर शायद मैं 10 साल और ले लेती, और शायद मैं करती भी नहीं, बिकॉज 2 दिन में रूट बना के रख दिया अगर उन्होंने, तो मुझे और मोटिवेशन मिला कि ओह ही इज टेकिंग इट सीरियसली, नाउ वी हैव टू डू इट. So in our case, the without like an Audacious project is our baby now. We're passionate about it. So the next project is both of us doing it together. It's a trek. It's a long distance trek, but we're doing it together now. So otherwise in the other projects I am doing, he's following, or he was doing it and I was following it in the car. But now it's going to be the both of us together. So no, without him I wouldn't have been. No. And well, without me, I'm not sure. So cut to your poetry. What's the latest that you've written? Oh, there are a lot of unfinished pieces. Okay, you have this look in a sari with a belt purse and nice jewelry, and you know, and आप खड़े होते हो तो आप एक अपनी हैंडमेड डायरी से कई बार देखते हैं, कई बार नहीं, कई बार आप जबानी बोलते हैं. हाँ, so tell me this process कि this entire look, naturally, and is it a poetess's look, or is it just that this is your nothing, it's just that saris I think come naturally to me, because my mom wore saris all her life. Now she wears suits, but I think it's the easiest thing to wear, yaar. Abhi I don't know how to say those things on camera. Sometimes, you know, things that don't work for you actually sometimes are blessings, because I don't get clothes my size. Okay, neither do I. Right? So then what do you do? I look for spandex. Stretch ho jaye. You know, so the only things that come in my size are earrings and shoes, you know. Arre baba, I don't get shoes also. So very ऐसा होता है कि tiny feet. ये बड़े लग रहे हैं, tiny. My size is 3. Mine is 4. So I have to wear insoles in most of my shoes. I only fit into Nike. I don't fit into any other, I don't know if you can say brands, but I don't fit into any other sports shoe. And now for the trek, we don't know where will I get shoes from. I hope. Okay. And this one is like और sale चल रहा है, चलो, क्योंकि now it's convenient, नहीं fit आया तो वापस कर देंगे. So now you can take that chance. So I don't fit into things, and so saris seem to be the easiest things to do, and I'm comfortable also in saris. I can run in saris as long as I'm wearing shoes. I can't wear heels. Okay. So saris and shoes, and so if you notice, I don't even wear prim and proper saris. I wear very messy, because that's how I like it. Now, well, luckily it's become a style, but that's about it. There is no like deep thinking in it कि look बनाना है. And अब जो latest लिखा है, शायद आपने आज बोला भी होगा. I have to also tell you that our second project was Audacious project was funded by NSR. Like we had this thing, because the first project got a lot of like we got published and there were news about it. So our second we got some. You got some money. Yeah. ठीक है. This is something that this is your style, this conversational style. This I'm telling you, I haven't, like I said, I haven't read. Now the thing is, I really believe in the fact that दो चीजें same thought. Like you and I can think the similar
thoughts sometimes, because मेरा जो माँ वाला piece है, I have actually read someone else in English, some woman far, I don't know, US or somewhere, who's written something like that also. So मैं तो उसमें भी बिलीव करती हूँ कि सिमिलर भी हो सकता है, मगर मैं, क्योंकि मैंने रीडिंग ज़्यादा की नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि जो मैं लिख रही हूँ ना, कभी कभी वो ओरिजिनल है या वो किसी, क्योंकि समटाइम्स मुझे कमेंट्स में है, किसी ने लिखा भी है, किसी ने एक कमेंट में ये लिखा है कि मेरा कुछ सामान लिखने की कोशिश की गई है, मगर मैंने सुना ही नहीं है। मैंने ये गाना सुना है ऑब्वियसली, मगर मैंने क्योंकि इतना पढ़ा नहीं है ना, तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं इनसे इंस्पायर होकर लिखी हूँ। पोशीदा जो है, जो बिस्तर की साइड वाला है, वो एक्चुअली द थॉट हैज बीन इंस्पायर्ड बाय टाइम ट्रैवलर्स वाइफ. देयर इज अ scene in that which inspired me to write that so piece. Can we have few lines from that? Poshida, of course you can. कल रात बिस्तर की तुम्हारी साइड पर सोई, कल रात बिस्तर की तुम्हारी साइड पर सोई, बहुत सालों बाद कल मैं दाईं तरफ सोई, तकिए पर तुम्हारे शैम्पू की हल्की खुशबू थी, साइड टेबल पर तुम्हारी अधूरी पढ़ी किताब, तुम्हारी तरफ का सब कुछ अलग लग रहा था। इस 5 साल पुराने घर में, इस 3 साल पुराने पलंग पर कल रात सब नया सा था। क्या तुमने कभी अपनी तरफ की छत को गौर से देखा है? दाईं तरफ की छत बाईं तरफ से काफी अलग लगती है, मगर वो लकीर जहां से मेरी छत शुरू और तुम्हारी खत्म होती है, बहुत कोशिश करने पर भी नहीं मिली, ठीक उसी पोशीदा लकीर की तरह जो मुझे तुमसे अलग बताती है। कल रात दाएं और बाएं में कुछ फर्क नहीं था, कल रात तुम में और मुझ में कुछ फर्क नहीं था। तुम्हें याद करते करते मैं नहीं रही, कल रात मेरी जान मैं तुम बनकर सोई। बहुत खूब। तो जब मैं आपकी सारी पोइट्री सुनती हूँ तो उसमें देयर आर अंडरटोन्स वेयर यू आर आल्सो ट्राइंग टू टॉक अबाउट जेंडर, अबाउट लव, अबाउट आइडेंटिटी। तो व्हेन यू आर राइटिंग, ये होता है दैट यू आर आल्सो ट्राइंग टू कम्युनिकेट कि the strength within, the strength outside, the equation between man and woman, the boundaries that we have. Is that what goes on in a poet's mind? Like if there are a lot of poets out there, और आजकल ये भी टसल है कि there is pure traditional poetry and spoken word is something that is a they say it's a bastardized version of your original poetry. So where do you stand on that? How would you inspire the poets and say कि बताइए, and अपना thought, आपकी क्लैरिटी है कि you know what you're writing. It's not roses are red, violets are blue. I'm glad if it comes across like that. I think क्या होता है, थोड़ा सा शायद पिछले सवाल, मुझे लगता है मैंने क्लियर नहीं थी, पिछले सवाल से भी क्लब कर सकते हैं कि I'm not proud of the fact that I haven't read a lot. I plan to read more. I even right now have my Kindle where I'm trying to read, but the fact that because आपने इतना नहीं लिखा होता, वो आपको हेल्प भी करता है, क्योंकि आप ओरिजिनल थॉट भी ला सकते हैं, या इतना नहीं पढ़ा होता, और वो गड़बड़ भी हो जाता है कभी कभी, बिकॉज समटाइम्स व्हेन यू राइटिंग समथिंग यू हैव टू रेफर अ लॉट टू अंडरस्टैंड ये वर्ड कैसे यूज़ करें, कैसे लिखें, जो मेरे साथ होता है। जो अंडरटोन्स की आप बात कर रहे हैं, अगेन कुछ भी इंटेंशनल नहीं होता। मैंने जब लिखना स्टार्ट किया था, हम लोग स्पोकन फेस्ट में गए थे कम्युनिटी के, मैं और मेरे फ्रेंड थे, हमने कहा यार हमें ना यहाँ आना है, और ना हम ना ख़राब चीज़ें नहीं लिखेंगे, दुनिया में इतनी दुख हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, लोग गुस्से में रहते हैं, हम भी अगर गुस्से वाली कविताएं लिख देंगे या कहानियाँ लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वी वांट पीपल टू स्माइल, टू हैव अ गुड टाइम। एंड द फर्स्ट पीस दैट केम आउट वाज पेपर, and so if I had, because I had planned, because I'm a planner, I plan everything, so I had planned to write happy things, and the first piece that comes out is a gusse wala piece, technically, which is ab main paper hi udne lagi hu, that was the first piece, right? So what did you learn? You learned that you cannot plan these things, any kind of art and writing especially. So it wasn't intended to put it like that. Of course, when you write and you're in the zone, one thing connects with the other. Bal leads to sexism, it leads to gender issues, it leads to, okay, I don't give a, That says, I will do whatever I want to do and I will, but then आप जो मोहब्बत, मैंने ये भी सोचा था कि मैं मोहब्बत के बारे में भी नहीं लिखूंगी,
बिकॉज यार सब लिखते हैं, हम तो फिर ऐसा भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे. एंड देन एंड क्योंकि मैंने ये अब भी रियलाइज किया है कि मैं नहीं लिखती टॉपिक्स के ऊपर, मैं वो लिखती हूँ जो मेरे साथ हो रहा होता है. When I slept on the right side of the bed, that happened with me. It happens that क्योंकि कभी कोई बोलता है कि यार तकिया धो लेते तो शैम्पू की खुशबू नहीं आती, which is a very funny comment according to me. But dude, for me that's romantic because that makes me think of my No, person. smells can trigger a very Exactly. sensual memory. Absolutely. And Olfactory- childhood memories. It does. आप Yes. क्यों जाते हो अपनी नानी दादी के घर वो स्मेल्स को ही नेल करने? Exactly. It's the strongest sense that Yes. we have. Okay, so I'm saying that I didn't plan to write a piece on Mohabbat. And then a lot of it, maybe it works because my partner and I are quite different. And so things that you tell him, they luckily get expressed nicely in a poem or a prose. तो मेरा तो उसका क्रेडिट भी उनको जाएगा, बिकॉज अगर हम लोग ये बातें नहीं करते या मैं फीलिंग्स फील नहीं कर रही होती तो मैं शायद लिख नहीं पाती. तो आपको कब पता चलता है कि जो मैंने लिखा है वो अब पूरा हो गया है, मतलब वो नहीं पता चलता, वो कभी भी पूरा नहीं, क्योंकि अभी भी जब मैं पोशीदा पढ़ती हूँ, पोशीदा थोड़ा बहुत वायरल हुआ है, उससे वो परफॉर्म करने से पहले मैं सोच रही थी कि मैं ये परफॉर्म नहीं करूंगी. आई वांट टू वर्क ऑन दिस. आई वाज़न्ट प्लानिंग टू परफॉर्म, आई वाज ओनली प्लानिंग टू परफॉर्म बेपर एंड माँ, जब माँ 25 की थी. एंड आई हैड टाइम, आई वाज लाइक चलो एक और कर दूं, जैसे हाँ कर दो, टाइम है. एंड देन इट वेंट आउट एंड नाउ इट्स आउट देयर. बट हर पीस को देख के लगता है यार इसमें कुछ अलग लिखते हैं. जैसे कि बेपर में टेक्निकल फ्लॉज हैं. अभी आप जो बोल रहे हैं, अगर जो ट्रेडिशनल पोइट्स आएंगे वो कहेंगे ये क्या लिखा है, क्योंकि उसमें हिंदी है, खड़ी हिंदी है, उर्दू है. नहीं, पर वो हमारी भाषा है, सब तरह I से लोग understand, बोलते but हैं. अब मैं जब क्योंकि you are able to reach out to people who are being introduced to poetry. correct, but I'm saying that rules फिर हम break भी कर रहे हैं ना. लेकिन then again, I mean, I'm aware that I'm breaking the rules. I am aware that it's not probably traditional poetry because, but then Should poetry have rules? I don't think art should have rules. When I do photography, there's a photographer I love. Her name is Brooke Shedden. Now she is sometimes not called a photographer. She is called a digital artist because she will take a picture against a grey, white, black, red background, and then she'll take other pictures and then she'll Photoshop them. For me, even she is a photographer. Why is she a digital artist? Yes, of course. Now for purists, हर चीज के purists होते हैं ना. मैं Kindle पर पढ़ती हूँ, आप कहेंगे कि ये कोई किताब की खुशबू बेटर है. करेक्ट. पन्ने पलटिए. Kindle has encouraged me to read more than a physical book, a paper, because हल्की होती है, मैं लेती हूँ तो भी पढ़ पाती हूँ, अंधेरे में पढ़ पाती हूँ. I don't need light for that. For whatever reason, तो मैं इस वक्त स्टेज में हूँ, मे बी 2 years later will be different, जब मैं इस तरह की प्योरिस्ट नहीं हूँ. और हो सकता है 2 साल बाद हम वैसे लिखने लगे जैसे लोग. तो अब आप लगातार लिखती हैं, कोशिश करते हैं. एंड स्पोकन वर्ड पे सबसे पहले कब गई? दिस वाज 2020, राइट? Spoken word, you mean? As in the first time that you went on stage and it was in June last year, in 2023. and that it went viral. No. And June I went, then I went in October. And October के बाद मैंने डिसाइड किया था महीने के 2 या 3 ओपन माइक्स. But June में what was the thing? Just an event that friends मुझे said तब कि पता तुम चला बोलो. था कि नहीं, क्योंकि मुझे तब फर्स्ट टाइम पता चला कि ओपन माइक्स आर accessible. I didn't know that you could buy tickets on Insider or Book My Show and go and stand on the stage And just speak. Yes. So when I say there were 5 people out of which अच्छा, 3 so no scare, as in no वैसा fear नहीं, fear वो नहीं अब था. ज़्यादा होता है because when people get to know I'm performing, they come to see me. Now that's because now I have something to lose. Earlier I didn't have anything to lose. So now I'm trying to work on that, where you're still doing it for yourself. You were doing it for yourself earlier also. So this year the poem went viral. I performed that in December. It went viral, I think January, mid-January, yes. So how much has technology leveraged your work? क्योंकि I think the reason I'm here is because of that. But then again, the same poem, the Paper, it's not a poem, it's free verse, it went for me viral in 2020 also, क्योंकि तभी उसके 10,000 views थे, 10,700 views to be precise. Because and for me तभी 1,500 followers थे, तो मुझे लगा अरे हम तो viral हो चुके हैं. More than viral, the messages, the kind of messages that I was getting, women actually went bald. They were like, we were thinking about doing this.
There are women who have alopecia who have contacted me and written to me. There are people who've told me, we want our boys to listen to this, to understand that. And another important thing about this piece, everyone thinks I've written this against men. I have not written this. I have nowhere have I mentioned किसी आदमी ने मुझे ऐसा कहा. And this is for the first time I'm saying this here, is that actually women have come up to me and told me, तुम लड़का लगती हो, तुम similar लगती हो, तुम्हें ये लगता है, वैसा है. It's not the men. But ऐसा होता है कि अगर हम कुछ बोलते हैं तो सबको ये लगता है हम किसी के against बोल रहे हैं, right? So that's why when a lot of men have commented on, you know, मर्दों के भी तो नियम है, आदमियों के भी तो ऐसे हैं. हाँ, आदमियों के, मैंने नहीं बोला नहीं है, आपकी अपनी स्ट्रगल है, मेरी अपनी स्ट्रगल है, मैं अपनी स्ट्रगल का लिख रही हूँ, आप अपनी स्ट्रगल का लिखो, या कोई और आर्ट वर्क बनाओ, आपको किसी ने मना नहीं किया. तो ये जो नोशंस होते हैं ना कि आपने, अगर एक औरत ने बोला है, उसने आदमी के ही अगेंस्ट बोला है, मैंने कहीं ऐसा नहीं बोला कि मुझे किसी आदमी ने my partner who's, you know, like with me at every point in time. So मुझे मेरे घर में नहीं पीछे किया जा रहा, ना मेरे फादर ने किया, ना मेरे ब्रदर ने किया, ना मेरे पार्टनर ने किया. तो मुझे पर्सनली आदमी ने पीछे नहीं किया ना, तो मैं उनके अगेंस्ट नहीं लिख रही. बट आई अंडरस्टैंड व्हाट पीपल गो थ्रू. It's a woman who told me, hey, you should wear heels because you don't look tall. Hey, you need to look presentable. So, yeah. But the words have healed you. It's been, you know, I was because you were talking about Mehak Mirza also, that she also helped heal you. She is a storyteller. She's helped me, because now when I get into that spiral of negative thoughts and all, I stop myself, and that's a big achievement. Yes, so words have healed me, you know, because I make photographs also, and I make I do embroidery also, and I write also. Now when my artwork, the embroidered artwork, you can see, you can feel, you can touch, 3D, 2D, French knots. My writing you can't touch, it's not tangible. Well, you feel it. But it still touches you, or with me. So when I don't know how to say this, when I hold my other artwork in hand, it gives me a different kind of peace. When I hold this, it gives me a different kind of sukoon. This is something else. But I'm nothing without all of these. So, word of advice for budding poets, because now that you've gone viral, you've performed, you're being invited to perform. Should poets or writers or anyone who wants to express themselves, should they have parallel sources of income? Because how do you sustain yourself through these words? Yeah. So again, I don't think I'm the right person, or I'm in a position right now to suggest anything to anyone. I would just say, आप लिखते रहिए, क्योंकि मैंने जितना सुना है, apparently it's difficult to sustain. And also, again, right place, right time. My pieces got viral, but there probably are more pieces, more stories which are better than mine, which have not gone there. So I would just say, आप लिखते रहो, या जो भी करते रहो, consistent हो जाएगा. मतलब it will work. If it's a source of income or not, I think everyone has their own journey. I don't think, I really don't know much about this. Okay. So I don't know if you should keep this. But my advice would just be to keep doing what you're doing. Just keep doing. जिसमें मिलता है ना, peace करते रहो. So finally, leave us with some nice words that are close to you. It can be of some other poet also, or it can be something that's just whirling around in your mind, like this little darvish of words going round and round. बेसाख्तापन सीख रही हूँ, लगता है आजकल बचपन जी रही हूँ. Because I'm doing a lot of things that I didn't do when I was a child also. Spontaneous things are happening. Hey, tomorrow let's do this. We're going for open mics. We're meeting people. कुछ सीखने को मिल रहा है. जब जितना हंसना है हंस रहे हैं, रो भी. And there's the best thing about, I don't know, women creatives what feel like. आज मैं एक सेशन में थी और मेरे को आंसू आ रहे थे. And the best thing I find about myself is, भाई vulnerable हो रहे हो तो आप हो जाओ. Because मैं open mic में जाती हूँ and I'm a featured artist there, and if I'm feeling nervous, I say, guys, I'm really nervous. चलो अभी थोड़ा ताली बजा दो, थोड़ा encourage करो. Because I feel vulnerability and safe spaces are a privilege now. And good thing right now, at least in Bombay poetry circuit, is कि
वहाँ सब अपने लोग हैं, वहाँ आप हो सकते हैं वल्नरेबल, पूरे खुल सकते हैं और लोग आपको एनकरेज करते हैं, वहाँ आपको आपके जैसे लोग मिलते हैं, आपको इतना गुस्सा नहीं आता कि आपको लगता है अरे यार हम सेम सोच रहे हैं। अगर मैंने कोई गुस्से वाला पोएम लिखा विद व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड यू विल सी समवन एल्स इज रिटन समथिंग ऑन द सेम टॉपिक एंड यू आर लाइक ओह सो द वर्ल्ड इज नॉट दैट, ऑफ कोर्स अभी पीपल हैव नॉट पुट इट आउट देयर बट है, होप है, सोच रहे हैं लोगों में, कॉन्शियस अभी भी है। तो बस अपने कॉन्शियस के साथ सब लिखते रहें, इंस्पायर होते रहें, दूसरों का ना उठाएं ज़्यादा, अपना लिखें, लिखते रहें, जर्नल करें, बनाएं चीज़ें, just do it. My favorite is Nike. Just do it. You never know. Netflix is watching this कि हमने stand up comedians का तो कर दिया, so let's do spoken word stand up and let's crowd live everyone. आ जाओ भाई, बुला लो. Well, so that too, that spontaneous combustion and आप बेपरवाह रहिए and बेबाक रहिए. And thanks Aanchal for your time. Until then, please keep watching Just Talking. Yes, please say some words. Let's all Just subscribe Talking. to Just Talking. This was lovely. I actually मैंने आपसे पूछा था कितना वक्त लगेगा, मगर मुझे खुद नहीं समझ आया कितना. नहीं, लेकिन मुझे वो तो आप उनसे पूछिए, उन्हें खड़ा किया हुआ है. मगर no, it was really lovely. I hope everyone gets something from this. Just do it, guys. That's all. Thank you so much.